CEO Trans Asia Biomedicals. Warm welcome to you, sir. And Dr. Satish Reddy, Chairman, Dr. Reddy Laboratories. Thank you very much indeed. और जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है, हम हर कार्यक्रम की शुरुआत देव आह्वान के साथ दीप प्रज्वलन द्वारा करते हैं। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्रीगण एवं मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण से कि वे कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। दीप प्रज्वलन के साथ आह्वान करेंगे सरस्वती देवी का, सरस्वती वंदना के साथ। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः Ladies and gentlemen, let's once again put our hands together as we thank the dignitaries for formally inaugurating the ceremonial inauguration of Indian Pharma and Indian Medical Devices 2023. Thank you very much indeed. And now I have the proud privilege in inviting Secretary General FICCI, Shri Shailesh K. Pathak, to kindly begin the proceedings with his welcome address. Let's put our hands together to welcome him. बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, श्री भगवंत खुबा जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर स्टेट फॉर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, प्रोफेसर अजय सूद, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, मिस अपर्णा, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, friends in the audience. संभवतः इस कमरे में सबसे कम मुझे ही मालूम है about pharma and medical devices, and therefore this was a great learning opportunity for me when I was reading the background notes for today's conference. But before anything else, I just wanted to highlight that there is one person in this room who woke up at 3 in the morning. हमारे माननीय मंत्री जी आज ही सवेरे जिनीवा से 3 बजे सवेरे आए हैं और आज हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ उपस्थित हैं. A round of applause. As you know, he was attending the WHO Geneva session, but the overall focus of today's deliberations will be on medical devices. I am very happy to say that FICCI represents private business and enterprise in India since 1931, 1927 actually. Gandhi ji 1931 में हमारे AGM में आए थे, and I'm delighted to have the senior CEOs present, Dr. Reddy, Mr. Vishwanathan, and all of you in the audience. We're welcoming senior government officers, old friends from the various states and the various ministries. And today's focus is medical devices, tomorrow's focus is pharma. Now, this is the 8th edition of the Pharma and Indian Medical Devices, and we are very proud in FICCI to have this long association with Government of India's ministries, especially the pharmaceutical Secretary Aparna ji. We have seen India being a leader in the pharma sector, and in recent years, we have also seen a great growth in the med-tech sector. And sir, this is possible only because of the great support from the Government of India and the Government of States. So we would like to say a round of applause for the support from the Government of India and the Government of States.
हम लोग आज 2023 में हैं 2023 and much has changed in the last 5 years in the health sector. And the kind of success that India has seen in the digital solution space will extend to the digital healthcare solutions of India. Ayushman Bharat is a great example of the leadership provided by the government. We are going to have deliberations on how to boost medical education research as well as healthcare infrastructure and workforce. But overall, in the recent budget, there was this announcement that ICMR laboratories can be used with permission by the private sector for their research. And we in FICCI look forward to an India where government works closely with business, works closely with academia and not-for-profits to create more jobs, to create more business opportunities, and to create a better India. Thank you, everyone, for joining today's deliberations. Thank you. Thank you very much indeed, sir, for those warm words of welcome and for kindly setting the context for the next 2 days. And now, ladies and gentlemen, I have the privilege in inviting to kindly address the August House, Shri Satish Reddy ji, Chairman Dr. Reddy's Laboratories. Let's welcome Dr. Reddy with a warm round of applause. Honorable Minister Sri Manshukh Mandaviya ji, Sri Bhagwant Kuba ji, Madam Aparna, Professor Ajay Sood, dignitaries on the dais and ladies and gentlemen. It is indeed a privilege. I am delighted to be here at the summit. In fact, in the past occasions, ever since the summit started, I was present on 2 different occasions. And the relevance and the importance of this particular event, it's somewhat different, I would say, from the past. It's different for 2 reasons. One, this is a post-pandemic time. And especially if you consider the kind of traumatic times that the country has gone through during those times and how we came out of it, it is something quite commendable. And all of us feel extremely proud that in terms of, if I talk about the industry point of view, the contribution from the industry itself, but more importantly, I think the steps taken by the government at that point of time, that has helped us, collaboration of the industry with the government, helped us get through these very, very difficult times. So once again, would like to thank the government on this occasion that post-pandemic, all of us are back to normal and getting on with our lives. There was tremendous collaboration. At that time, I remember there was a tremendous support from the regulators during that time. And also from the government, there was almost daily calls. Even within the industry, the CEOs got together. There was pretty much daily calls to make sure that all of us work together to see how we can continue the supplies of medicines and how we can ensure the safety of our employees from the industry point of view. And finally, we came out of it. So that was one reason why we are happy with how things happened there. The second part, which is more recent, I would say, is the geopolitical realignment which has taken place. And this would be from the last, probably the summit which would have taken place last year. This has also given us a tremendous opportunity. In the whole global supply chain of pharmaceuticals, we find that India is in a very enviable position. It's a great opportunity which arises. And obviously, anytime there's a crisis, it is an opportunity for all of us. And that's something we look forward to, because on the backdrop of this crisis, there were also production-linked incentive schemes which were launched by the government. That actually helps. There is also, besides the production-linked 1 and 2 schemes, there is also the research-linked incentive scheme which is in the offing, which I think bodes very well for the industry in terms of what we can do, because once again, it's a great encouragement from the government to the industry, and certainly industry will rise to the occasion to make the best out of it. But I think what's important is what comes after this, because there is an opportunity, there is industry which is doing very well, there is support from the government. I think what's very critical is if you look at the goal,
We've talked about this several times. So today, if it's $42 billion, we are saying that we want to reach $65 billion by 2024. By 2030, we would like to be a $130 billion industry. But it's not an easy task. It's quite a difficult thing because so far, whatever has been the growth, it's been contributed by APIs. It is being contributed by largely generics, I would say, both domestically and internationally. But then if you have to move forward, it requires innovation. It requires innovation at all levels. Even in the generics, there is plenty of innovation that can be done. But I think really the holy grail will be if we're able to discover drugs and market it ourselves. I think that will add a lot of value because all of us are aware that when it comes to volumes, we are the third largest in the world. But when it comes to value, we are 14th. So it shows the gap that we need to move to the next stage and then we need to get there. So it's not an easy thing. But I think what is required, amongst all of us, all the stakeholders, industry, the government, and everybody, is some kind of a compelling mission which will actually help us get there. Because again, all these elements are present in different parts of the ecosystem. There is academics, research institutions, which do great work. There is industry, which has always contributed pretty well. That's why it's a 42 billion industry. It's has a lot of laurels to it. There's a lot of technology. There's scientific depth in this country. There's also policy making, right? Which I think, again, I would point out is a critical thing because it's the policy itself which really made this industry, if I may say, because back in 1970, when the Indian Patents Act was passed, that actually spawned the API industry. It spawned the generic industry in India. And then the liberalization, when it happened, Indian companies started looking at exports, especially the regulated markets, and very high quality medicines came out, and the quality standards were set very high. So that was the beginning. So again, if you see the recent policy announcements also, that also will make a change. But I think it all has to come together. The key point is that because all the stakeholders can't be working in isolation. If it's industry, it has to work closely with academics. The academic institutions also have to collaborate deeply with the industry. From, again, the policymakers, the lot is expected. Especially for all these recommendations is something we have made because we said that, the regulatory system, the approval processes need to, be in tune with what the industry is. We need very close academic and industry collaboration. This is also we have asked for. Also, when it comes to the funding, I think that's a very critical thing because very recently, just almost 10 days ago, last week, in fact, I was in Israel to visit, the country just also to understand the ecosystem. What was remarkable was the entrepreneurship, because if it's known as a startup nation, even in life sciences, the kind of startups that exist there, the scientific depth, the institutions. There was an institute called Weizmann Institute, which produced a Nobel laureate. It also produced almost about 7 blockbuster drugs, which have a combined cumulative value of $35 billion. All this came from a country which is just about 10 million people. It's a country which is in a conflict zone. But in terms of the enterprise, in terms of the scientific depth, in terms of the whole ecosystem that existed there, it's quite remarkable. It's something that all of us should look forward to, because one of the things I also was quite touched was because the same Weizmann Institute, the Nobel laureate, which I talked about, was a lady, 80-plus-year-old lady called Ada Yonath. She was given the Nobel Prize for discovering the structure of ribosomes. Why it was touching for me personally was because just 2 months back, it was my father's passing of the 10th year. He passed away in 2013. And his first memorial lecture, which we instituted, it was given by Ada Yonath, the Nobel Prize laureate winner. And he had written a book before he passed away. It was titled as Unfinished Agenda. And that, I think, really resonates with what I'm talking about so far, because when it comes to innovation, I think we have all the capabilities. I think we certainly have the elements in the ecosystem in place. It just has to come together. It needs a lot of support from the government, which we look forward to, because, again, taking the Israel example, one of the things we also keep quoting when we request the government is, there is something called an Israel Innovation Authority. It in fact, funds a lot of this basic research. And the key principle behind that is that the scientists should be free from the other pressures. They should really look at basic science. And then there's a technology transfer office, which also we visited in the Weizmann Institute. Again,
funded by the government, which translates all these academic discoveries to the industry. And that's how they create tremendous value. This whole thing is fine-tuned in such a manner. The government also contributes quite a bit. 85% of the basic research is funded by the government. But the VCs also invest into it because they're willing to take the risk. What the government says is that they would like to make sure that as far as this fear of failure, because there are a lot of people who are from the scientific community here, that fear of failure is not there. So in the academics, they pursue the research, they come through with breakthroughs. To translate it into commercial discoveries, that's where they use the technology transfer offices, they invite the industry, and through these partnerships, that's where it gets forward. So I think all the elements are very important. It's the funding part of it, the research. Ultimately, the value that it creates is something which is really tremendous. And when it really comes to coming back to India, I think we have all these capabilities. Even discovery, it's something that's been proven. There are companies who have undertaken research, but still that unfinished agenda which my father, Dr. Reddy, used to talk about, it's about not just discovering molecules, but taking it to the market. And this is where I think the failure part of it plays out, because as all of you know, it's only 1 in 10,000 which makes it to the market. But the important thing is we do have the capability. We do have the entrepreneurship. All I think we need is little support from the government to make sure that not just the research-linked incentive scheme, but also the scale at which this has to be done, where the remaining part of the ecosystem, especially the research institutions, the infrastructure that needs to be created, all this, I think, need to be done with a sense of urgency, because that will spur the innovation and make sure that that unfinished agenda will be realized someday. So once again, thank you very much for the opportunity. Thank you very much. Thank you very much indeed, Shri Reddy ji. And now, ladies and gentlemen, to kindly share his views with this august house, I would like to invite CEO TransAsia Biomedical, Shri Arvind Vishwanathan. Let's welcome Shri Arvind Vishwanathan ji. Over to you, sir. Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Dr. Mandaviya ji, Honorable Minister of State, Shri Bhagwant Kuba ji, Professor Sood, Madam Aparna, Yuvraj ji, Satish Reddy ji, Secretary General FICCI, my industry colleagues from Pharma and MedTech. Thank you for giving me an opportunity to speak this morning in this august gathering. I feel honored and elated to represent the MedTech industry, which is moving ahead in the right direction to achieve an aspirational goal of $50 billion over the next 5 years. We are also targeting multi-fold growth by 2047, when we celebrate the 100th year of Indian independence. The theme of Indian medical device, scaling and innovating the medtech sector and creating a sustainable ecosystem, resonates well with our Honorable Prime Minister's vision of Innovate in India. While he mentions Jai Vignan, Jai Anusandhan in his recent speeches, the 2 days of conference over here will have well-crafted sessions across various topics that are relevant to the medtech ecosystem. The conference sessions, the CEO forums, the regulatory roundtables will provide a platform to exchange, deliberate ideas that will scale our medtech system to greater heights. Honorable Minister, sir, under your leadership over the last 3 years, we have seen a lot of positive changes and initiatives which has created a foundation to drive growth of the medtech sector. The recently announced National Medical Device Policy is one such, which will give a great boost to the ecosystem. The medical device sector getting its due recognition in the new Drugs, Medical Device and Cosmetics Bill will also give its due recognition to and a positive scale up for the ecosystem. Ease of doing business for new startups, the PLI scheme, Export Promotion Council for medical devices, setting up
various medtech parks and medtech ecosystems to make growth of the medtech sector have all been revolutionary ideas to scale up the ecosystem. Reducing the regulatory compliance burden, which was undertaken by Madam Secretary under your leadership with almost 14 regulators of medical device sector, attending the NMDPC meetings are all just to name a few. The sector is poised to grow multifold in the coming years. Medical device demand has already increased and will continue to increase because of the increase in healthcare infrastructure in our country. The tier 2, tier 3 cities, the access to healthcare, affordable healthcare have all been great drivers to drive the medtech sector. The improvement in both public and private healthcare infrastructure has seen a sea change over the last 8 to 10 years. The budgetary allocation for the sector by the Government of India has increased substantially, which will again drive and grow our medtech ecosystem. Development of medical colleges, nursing colleges, creating ecosystems, creating multidisciplinary courses for medical devices across various stages, various initiatives that are needed to build a very sustainable medtech ecosystem have all been great ideas that have fueled and will continue to fuel the medical device ecosystem. While the opportunities are growing exponentially, there are certain challenges that the medical devices are facing, and we will work together with the various departments to resolve the bottlenecks for growth of the sector. Today's and tomorrow's discussions, brainstorming sessions, roundtables have all been planned so that the medical device ecosystem can break barriers to create new frontiers in growth. Creating a research-based ecosystem that attracts investment, not only from MNCs, but also a whole lot of Indian companies. Leveraging the new startup ecosystem, how do we encourage startups to thrive, to scale, and to grow and build a mark, not only in the Indian arena, but in the global arena, are all very important topics that will be discussed. While Make in India story continues to unfold, it is imperative to build a system where the industry and government works together, make significant investment, make significant changes, and support and create a common ecosystem to develop the medtech sector. Class C and Class C devices continues to be imported in large numbers in India. Over 80% of its usage continues to be imported. How do we improve and create a system where more and more devices are made in India? Made in India for the world are key topics that we will focus. Collaboration between global medtech players and domestic manufacturers and growing medium and small industries in the medtech sector will be a very important factor to grow this ecosystem. Honorable Minister, sir, under your leadership and FICCI's committed efforts, I'm happy to mention that the India Pharma and Medical Device Conference has established itself as one of the most important programs in this industry, in this space, over the last 8 years. The CEO's Forum, the Regulatory Roundtable, and well-planned sessions are an outcome of action-oriented work over the last many years and will continue to build this ecosystem for the future. The Secretary Pharma and Joint Secretary Pharma, I thank you for your continued guidance and thank FICCI Secretariat led by Praveen, the Secretary General and others for their contribution in India's pursuit of economic development and growing this medtech sector. Before I conclude, my top 4 recommendations from the medtech perspective for us all to brainstorm over the next 2 days. Long-term vision, creating a cohesive ecosystem, a strong foundation that is needed to spiral the growth for the future. Introduction of R&D and quality-linked incentive schemes that will be important for this industry to grow, and this is a support sought from the Government of India.
predictable long-term policies which will give a positive message to investors and attract investment and create new companies, new platforms that is not only for the growth in India, but also for the globe. Moving from current procurement methodology to a value-based procurement system will be beneficial to drive growth in the Indian medtech ecosystem. With this, as a representative of the medtech industry and FICCI, I thank all the dignitaries on the dais and attendees and look forward for a great meeting over the next 2 days. Thank you. Thank you very much indeed, sir. Ladies and gentlemen, the Indian pharma industry has achieved a significant growth in both the domestic and the global markets and is the third largest in the world. And the Government of India has commenced various initiatives to strengthen the medical devices sector with emphasis on research and development and 100% FDI for the medical devices to boost the market. And I now have the proud privilege in inviting Ms. S. Aparna ji, Secretary Department of Pharmaceuticals, to kindly address the August House. Ladies and gentlemen, let's put our hands together to welcome ma'am. Good morning to all present here, and it is our privilege to have the Honorable Minister for Chemicals and Fertilizers, also the Minister for Health and Family Welfare, Dr. Mansukh Mandaviya ji here. Sir, we are extremely grateful to you for having made the time, despite having just landed a few hours after your very strenuous journey to the World Health Assembly, and also for your continued guidance in all our endeavors, all the efforts that we take to promote the industry and meet the goals of universal healthcare. So I would like to start with our gratitude to the Honorable Minister. He is, I have spent 37 years in service, and I can say that he is by far the best minister, one of the best ministers I have worked with. So it is truly a great help for us as we try to facilitate the growth of the industry. I would also like to extend a very warm welcome to our Minister of State for Chemicals and Fertilizers and also Non-Renewable Energy, Shri Bhagwant Kuba ji. He has also been tireless in supporting the department, providing feedback, providing inputs, guidance whenever it is required. And even he, despite his very busy schedule, sir, I know you have to go back for one day and then come back again. Despite the very busy travel schedule, he has made time for us. Thank you so much, sir, for being with us and guiding us. He is one of those who is always there, on whom we can depend for any kind of problem resolution or advice. Thank you so much. We are also extremely grateful and gratified to have here Professor Ajay Sood sir. He is the Principal Scientific Advisor to the Honorable Prime Minister. It is a very prestigious position which takes up a lot of energy but provides huge benefits to the country when the Honorable Prime Minister himself from the ramparts of the Red Fort has announced that in addition to Jai Jawan, Jai Kisan, we will have Jai Anusandhan as one of our mottos as we go forward to become a developed nation by 2047. Thank you so much, sir, for being here. And sir is also, again, an extremely supportive, helpful person. Just yesterday, sir has presided over the expert technology group and given his blessings to the new R&D policy that is going to be brought out soon for the pharma and medtech sector, and the new schemes for providing promotion for research and innovation for the pharma and medtech sector. So it is happening because we have stalwarts like Professor Ajay Sood at the helm who are able to provide advice on how best we can support industry to become more innovative, more research-driven, and more value-based. It's also a great honor that we have with us several luminaries, diplomats, expert speakers,
officers from the state governments, state drug controllers, regulators here, as also all the representatives from both the pharmaceutical and medical devices industry. We heard both Satish ji as well as Mr. Vishwanathan just now, who gave in very succinct and measured terms the expectations that the industry has from this conference. Sir, this is the 8th edition, sir, of the annual conference, which is a flagship event of the Department of Pharmaceutical. It covers both pharmaceuticals and medical devices sector, and as the elder brother, I'm sure the pharmaceutical sector will appreciate that today we have decided to keep the day reserved for medical devices, which is a growing sector. It is a sunrise sector, and a sector which has now found its place in the sun. I am supposed to speak for only 6 to 7 minutes, so it is very difficult to enumerate all the work that has been done for both these sectors, but I will just very briefly touch upon the parks that are being set up, both for bulk drug and for medical devices, the 3 PLI schemes for APIs, for medical devices, for pharmaceuticals, which are all doing very well, the schemes for supporting clusters, the organic clusters, both in the pharmaceutical sector as well as the medical device sector, and our schemes for supporting the industry in ensuring that it has the best ecosystem by way of producing sufficient analytical and authoritative study reports to support policy making in the sector. Sir, both the sectors have come a long way. They have made us proud during the last 2.5 years of the COVID pandemic, sir. There has never been a single moment when we did not get support of the industry, whether it was for large-scale purchase and procurement of drugs during COVID, or sometimes when suddenly, sir, we were running out of syringes, you would recall, sir, and we spoke to the biggest syringe manufacturers here, and they were immediate in providing additional supplies, even though they had not planned for it. So this is the kind of support that the industry has extended. Industry has also made India proud as the pharmacy of the world, and also in exporting various devices wherever required during these several last years. However, I think this is a good time to come together and think about the way forward. And there I would like to just mention that the areas of interest that I believe that industry should be providing its feedback, its suggestions, its inputs to us are the following. And I would like to cover both pharmaceuticals and medical devices in this. The first area of attention that I hope the industry will speak about is an unfailing adherence to the best quality in the products that we make, both for our national markets and for the export market. So both the pharmaceutical and medical devices sector can provide inputs on how we can ensure that the quality of the products is of the top class, it is best in its class. Second area of attention, as has already been mentioned by both the industry speakers, would be how we pivot from being a cost-based competitive industry to a value-based competitive industry. How do we ensure that research and innovation is integral to the growth going forward for the industry? For that to happen, it is not just industry which has to be innovative, the right ecosystem has to be created, and there would be an important role for the regulators, many of whom are present here, I can see them in the hall, as well as for academia and other stakeholders to ensure that we build that kind of an innovative ecosystem. The third is to be able to capture more of the global value chain, more of the aspirations, especially of the global south, to provide quality products at affordable prices and in a reliable manner. Honorable Minister has just come back from the World Health Assembly. He has spoken about the strength of Indian industry in this context, but I believe that we would greatly benefit from your feedback, your inputs on how we can grow India with global champions, in addition to being Atmanirbhar and self-reliant, how as a country,
and as industry, we can contribute to universal public goods in terms of good quality, affordable medicines and medical products. That would be a huge contribution from India to the world as it marches towards becoming a Vikasit Desh or a developed nation. We have also today arranged for the launch of several of our initiatives, sir, and it is a watershed day for the medical devices sector. Today, Honorable Minister, in the august presence of Honorable MOS and our PSA to the Honorable Prime Minister, will be launching the policy formally as also the strategy document. We also have an action plan for the same, which is an internal monitoring document. We'll launch the Export Promotion Council, specially for the medical devices sector, which again is a watershed moment, for which I would like to thank Shrikar Reddy here, who is present on behalf of the Department of Commerce, who, sir, was extremely quick in giving us the approval for setting up this council, which will be now set up in Yeida, that is next door to Delhi, and also for the launch of special schemes for the cluster development and for support to testing laboratories. I will just take a minute on the last item. This is one of the ways in which the department tries to respond to the ask and the feedback from the industry. Medical device industry has been telling us that there is a huge gap in terms of testing facilities, and if we are to grow as a domestically strong industry, if we are to compete with the traditional importing supplies, we must have good testing, and this is also part of the quality and innovation agenda. So we will also be launching a scheme for that. As the industry has come forward, both in the PLI schemes and in the earlier schemes, I do hope that industry will come forward to take advantage of these promotional measures taken by the department and ensure that together all of us stakeholders in this sector ensure and make it possible for India to achieve its full potential in terms of both pharmaceuticals and medical devices sector. With these words, I would again extend a very warm welcome to all of you and wish you very fruitful, meaningful deliberations during the day. Thank you. Thank you very much indeed, ma'am, for that kind address. And now, ladies and gentlemen, I have the proud privilege in inviting Professor Ajay Kumar Sood, Principal Scientific Advisor to the Government of India, to kindly share his esteemed views. Ladies and gentlemen, let's put our hands together to welcome sir. Honorable Ministers, Shri Mansukh Mandaviya ji, Shri Bhagwant Khuba ji, other dignitaries on the dais and off the dais, business leaders, invitees, ladies and gentlemen. It's absolutely a pleasure for me to be a part of today's inaugural session. And for this, I would like to thank a very dynamic secretary, Aparna ji, with whom I have been interacting for the last 1 year. There has been never a dull moment when I interact with Department of Pharma. So much is happening that it has really made a difference. Even yesterday, we had the policy in the Empower Technology Group discussed and appreciated, and the scheme to implement it. It really tells the pace at which the pharma and the medical device sector both are growing in India under very able leadership of the leaders on the dais here, and I would really like to thank them for really taking India on the world map. It's not easy because we have been importing devices so far, majority of them, and it will take us a lot of effort to really come to the standards which are expected, and we are doing that. So if you look at it, this sector, medical device sector, is also going through a metamorphosis. You remember the 1970s and 80s, when the devices, if they were based on microprocessors, it was a big thing. That was the time we were growing as students. Then, of course, came the digitization, computerization, and now is the era of artificial intelligence. So more and more devices now will have the advantage of AI in a positive way.
And that will again be a very big area for Indian industry to get into, which is already happening, but this is something we should keep it. You can see that medical devices are segregated into major sectors like consumable, disposable, diagnostic, imaging, patient ads, orthopedics, and so on. But what I find fascinating when I see the news and literature is the latest in this is the brain-machine interface, where the devices which really connect to the brain. And you would have seen a recent news, I'm sure it was there in TV all over, where the group from Switzerland, they have really done the interfacing and made the paralyzed man walk with this interface. So when the paralyzed man thinks of something in the brain, some signals are created, neuron signals, which are picked up, amplified, gone through a process of evaluation and AI, and then fed back, and the movement occurs. I think this is really a beginning of a huge sector in around the world, and I hope India will also come up in this sector, which will be extremely futuristic. So I think a lot of it has already been said, that how it is a growing market and how we need to really reduce the imports. And as mentioned, there are three policies which really make a difference. Of course, one is the PLI, other is the phased manufacturing program, which you are looking at, and the other is the public procurement order. They all form the integrated approach to empower manufacturing to produce locally and create and add value to the products and processes, and gaining preferential market access. And this is the way in all the three incentives government is working. Glad to see the Department of Pharma is taking a lead on all the three things. And I was also happy to see in the phased manufacturing program, the other day I was listening to a presentation by MITI, the Ministry of Electronics under Indian government has conceptualized the scheme to promote indigenous manufacturing and domestic value addition in locally manufactured medical devices. So this is the whole of government approach, whether it is the Department of Pharma or whether it is MITI or whether it is telecom, if you want to look at telecom medicine. All these things need to work together, are working together, and I'm sure it will go a long way. So the last thing which was mentioned by Aparna ji just a few minutes back is the Export Promotion Council for Medical Devices, also mentioned by Dr. Reddy. Again, a very, very laudable initiative, and I'm glad to see that it will have two regional centers. I think one in Visakhapatnam and one somewhere else, I forgot, Hyderabad. And again, this again is telling that lot of effort by our government is happening to promote this, which will also have 12 medical device clusters, as was mentioned, and also centers for testing lab, which in my mind is extremely crucial. If we have to really make dent into export market, this reliable testing labs is absolutely must. Lastly, I will just say that all this will happen on a scale when research and innovation, as was mentioned by Dr. Reddy, forms an integral part of the entire ecosystem. We have to come up with new concepts, new devices. This is where the market will be really huge. And again, the incentives like research-linked incentives have to be looked at, what should be done, because in all these incentives, we have to also keep in mind a possibility of failure, which we have to recognize in the general audit sense of government. It may not be the right word, but we have to see how do we factor in with all the care that we give incentive to the research will feed into the new products. I think that's where
we will have the early bird advantage of making a splash in the international scene. This innovation is the key, and I cannot overemphasize this, which has already been said from this dais. So I think in this whole thing, again, which was briefly touched upon and where our office is deeply involved, is the deep tech startup system. As you know that India has almost like 95,000 startups. And as we speak, the number is increasing. But if you look at the deep tech startups, means based on the innovation, based on the original work, in India, the estimate is not more than 4,000, maybe 5,000 at best. This is a small number. This number has to grow in a substantial manner. And this medical device is one area where the deep tech startups can make a big impact, because this is where I'm saying the innovation has to be fed to the market, marketable product. So the deep tech startups again has some issues, and my office is looking at some recommendation we'll be making to the government to see that we nurture the deep tech startups, because deep tech startups can be very different from the startups. It will need some sustained funding, sustained support. All this has to be done, and which will be again very important for the devices, medical device and pharma sector, which this conference is about. I see a great future, and I thank Aparna ji and our honorable ministers once again, and the leadership for having me here. I see a bright future in all of you. Thank you very much. Thank you very much indeed, sir, for kindly sharing your esteemed views with the audience present here today. And ladies and gentlemen, we are indeed honored to have amongst us Shri Bhagwant Kobaji, the Honorable Minister of State for Chemicals and Fertilizers and New and Renewable Energy, Government of India. I would request everyone to kindly put your hands together to welcome the Honorable Minister of State. इंडियन मेडिकल डिवाइसेस एंड फार्म का 8वीं इस सभा में उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री और फर्टिलाइजर और केमिकल्स मंत्री जी श्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, श्रीमती एस अपर्णा जी, श्री सतीश रेड्डी जी, अजय कुमार सूद जी, युवराज जी, अरविंद विश्वनाथ जी, शैलेश कुमार पाठक जी, श्रीकर रेड्डी जी और इस सभागृह में उपस्थित सभी सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण और देश भर में आए हुए फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस के सभी सीईओज और माध्यम के मित्रों, स्वास्थ्य क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वास्ट है और बहुत ही चैलेंजिंग भी है। इसी के लिए आज मेडिकल डिवाइसेस भारत के करीब 11 बिलियन यूएस डॉलर की यहाँ पर आज मार्केट और 1.3% ऑफ द ग्लोबल मार्केट। नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व में सभी क्षेत्र में लक्ष्य तय किया जाता है और लक्ष्य के साथ सभी के सहयोग से
समय सीमा के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त किए हुआ पिछले 9 साल के अंदर अनेक उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक 175 गीगावाट की लक्ष्य रखा गया था। 2022 से पहले उस लक्ष्य को प्राप्त किया गया। कोरोना महामारी के संदर्भ में भारत कभी वैक्सीनेशन का उत्पादन नहीं किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का प्रेरणा से भारत ने दो वैक्सीनेशन का उत्पादन भी किया और दुनिया का 60% वैक्सीनेशन भारत ने उत्पादन करके एक रिकॉर्ड बनाया। और मनसुख भाई मांडविया जी का नेतृत्व में देश में 220 करोड़ वैक्सीनेशन का एडमिनिस्ट्रेशन करना और करीब दुनिया के 56 देशों को एक्सपोर्ट करना, ये भी भारत का एक अपना आप में रिकॉर्ड बनाने का एक उदाहरण है। और मेडिकल डिवाइसेस आज भारत की मांग है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अस्पताल चाहिए, मेडिकल डिवाइसेस चाहिए, मैन पावर चाहिए, टेलीमेडिसिन चाहिए, दवाई चाहिए। होल ऑफ द अप्रोच जो अपनी भारत सरकार की, इसी के कारण आज भारत सब क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड करने का एक सिलसिला बन गया है। तो मेडिकल डिवाइसेस के अंदर जैसे आज मेडिकल अपना फार्मा पार्क हमने सरकार की ओर से काफी मदद कर रहे हैं, उसी तरह मेडिकल डिवाइसेस पार्क हम पॉलिसी बना करके हमने इस क्षेत्र के अंदर बढ़ावा देने के लिए और आने वाला 25 साल में भारत की मैन्युफैक्चरिंग की इस ग्रोथ दुनिया में करीब 10 से 12% की हमारे यहाँ पर उत्पादन करके हमें फायदा मिलेगा। और असिस्टेंस ऑफ मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटीज, ये भी इस क्षेत्र में अपने आप में एक मददगार साबित होगा। जैसे हमने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, भारत विश्व में इतना बड़ा सेक्टर के लिए हमने एक उदाहरण साबित किया है। पिछली बार पीएम बीजेपी ने करीब 1234 करोड़ की सालाना सेल्स, इसमें जेनेरिक औषध मिलता है तो मार्केट के वैल्यू के हिसाब से करीब 7,500 करोड़ गरीबों का पैसों का बचत एक साबित हो चुका है। इसी के साथ सैनिटरी पैड 1 रुपए के लिए बेच करके करीब 37 करोड़ हमने उसका रिकॉर्ड बनाया है। ये सारे चीजों को एक प्रेरणादायक प्रधानमंत्री जी का के ऊपर विश्वास और प्रधानमंत्री जी ने देश के 140 करोड़ जनता के ऊपर भरोसा रख करके पिछले 9 साल में हर क्षेत्र में बहुत ही ग्रोथ हमने देखा है। और आने वाला 25 साल में प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य, देश का इकोनॉमी करीब 32 ट्रिलियन US डॉलर रखा गया है। तो उस 32
ट्रिलियन डॉलर के हमारा इस क्षेत्र के अंदर मेडिकल डिवाइसेस क्षेत्र और फार्मा क्षेत्र के अंदर हमने क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आज भारत फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। आज दुनिया में कहीं भी अगर आप 4 मेडिसिन आप खरीद करते हो तो उसमें से एक जरूर भारत में उत्पादन किया हुआ एक मेडिसिन वहां पर मिलेगा। तो इसी के लिए आज और कल की इस समावेश में सीईओज, भारत सरकार के अधिकारीगण और सभी मैन्युफैक्चरर्स अपने आप का एक संवाद होकर के अच्छी परिणाम आएगी, मैं विश्वास के साथ कहता हूं और आप सबको मेरा शुभकामना देते हुए मेरे 2 बात मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय राज्य मंत्री श्री भगवंत खूबा जी के मार्गदर्शन के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद। And ladies and gentlemen, the National Medical Device Policy, which was approved by the Cabinet on April 26, 2023, today we are releasing the policy and its strategy document. I would now request the Honorable Minister, Dr. Mandaviya ji, to kindly press the button of the remote and release the document. I would also request the Honorable Minister to kindly unveil the policy and the strategy documents. And ladies and gentlemen, let's put our hands together for the release and unveiling of the policy and the strategy documents, also the National Medical Device Policy. Thank you, sir, for doing the honors. Ladies and gentlemen, the Medical Devices Export Promotion Council was approved by the Government of India with consistent efforts of the Department of Pharmaceuticals and the medical device industry. I would now request the Honorable Minister to kindly do the honors of launching the Medical Devices Export Promotion Council with click of the remote. And ladies and gentlemen, today we are joined by the 6 initial subscribers of the Medical Devices Export Promotion Council, namely Elingers Medical Systems Limited. I would invite the representatives to kindly join us on the stage. J. Mitra and Company Private Limited, Microlife Sciences Private Limited, Trans Asia Biomedicals Limited, Trivitron Healthcare Private Limited, and Wipro GE Medical Device Manufacturing Private Limited. I would invite Mr. Raghuveer Kini, the in-charge Executive Director, to kindly come up and receive the Certificate of Incorporation by the Honorable Minister. Shri Raghuveer Kini ji is in charge, Executive Director of the Medical Devices Export Promotion Council. Thank you very much indeed. And ladies and gentlemen, now we will witness the release of Scheme 3, Assistance to Medical Device Clusters for Common Facilities. I would request the Honorable Minister to click the button and release the scheme. And may I request you, sir, to kindly release the brochure also. Thank you, sir.
And finally, I would request the Honorable Minister to do the honors of releasing the 6 reports on pharmaceuticals and medical devices sector commissioned by the Department of Pharmaceuticals under PMPDS scheme. And ladies and gentlemen, the 6 reports are boosting the Indian medical devices industry, survey of medical devices clusters, assessment of skill requirement of Indian pharma industry, survey of pharma clusters, survey of novel and innovative and cost-effective technologies for the route of synthesis to decrease the cost of productions of APIs which are currently being imported to reduce import dependency, and strategy for leveraging ASEAN, FTA and trade potential with the Middle East countries for the pharma sector in India. Thank the Honorable Minister for doing the honors. और अब निवेदन करना चाहेंगे और आमंत्रित करना चाहेंगे आज के माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी को, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि वे अपने प्रेरणात्मक संदेश के साथ हम सबका मार्गदर्शन करें। और एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। इंडिया फार्मा और मेडिकल डिवाइस 2023 के अवसर पर आज मंच पर उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भगवंत खुबा जी, आज के अवसर पर विशेष उपस्थित प्रोफेसर अजय सूद जी, सेक्रेटरी फार्मा अपर्णा जी, सतीश रेड्डी जी, अरविंद विश्वनाथ जी, हमारे युवराज श्रीकर रेड्डी जी, शैलेश पाठक जी, सभी उपस्थित फार्मा और मेडिकल डिवाइस कंपनी के प्रतिनिधिगण, भाई एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे शैलेश भाई और मित्तल ने जो व्यवस्था की थी वो व्यवस्था कम पड़ी है और आपकी उपस्थिति ज़्यादा है। ये बताता है कि आपका विश्वास ये इवेंट पर है, आपका विश्वास इस सरकार पर है। मुझे ये भी समय देखा है, ऐसी इवेंट होती थी, फार्मा कंपनी, मेडिकल डिवाइस कंपनी को उपस्थित रहने के लिए मंत्रालय की ओर से, फिक्की की ओर से प्रयास होता था। कई बार कॉल करना पड़ता था और आयोजकों को चिंता होती थी कितनी संख्या आएगी, और आने वाले लोगों को भी ऐसा होता था कि चलो मिनिस्ट्री ने बुलाया है तो हमें जाना होगा, एक बार मंत्री जी और ऑफिसर को जरा मुंह दिखा दे ताकि हमारी प्रेजेंट हो जाए। लेकिन मोदी गवर्नमेंट में स्थिति बदली है, परस्पर विश्वास बढ़ा है। इंडस्ट्रीज को लगता है कि हम जाएंगे तो कुछ लेके आएंगे, सरकार को लगता है कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से, ऐसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें इंडस्ट्रीज के साथ संवाद करने का अवसर मिलेगा, इंडस्ट्रीज की समस्या को समझने का अवसर मिलेगा, इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट साथ में मिलके आगे का पाथवे तैयार करने का अवसर मिलेगा। इस विचार के साथ इस टाइप की कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है और उसमें बहुत उत्साह के साथ
आप सब लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं फिर से आपका स्वागत करते हुए आपको अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 2015 में मोदी जी ने पहली बार इंडिया फार्मा कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था और उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि इंडिया में फार्मा सेक्टर, मेडिकल डिवाइस सेक्टर ये बहुत बड़ा सेक्टर है। रिक्वायरमेंट की दृष्टि से भी, इंडस्ट्रीज की दृष्टि से भी। क्या हमें रेगुलर प्रतिवर्ष ऐसा कार्यक्रम करके उसको एक फॉर्मल वे में नहीं ले आ सकते हैं? और जब मोदी जी ने संवाद के सेतु को परमानेंट करने की बात कही, तब फिक्की और मिनिस्ट्री ने, मुझे बराबर याद है, बार बार मीटिंग करते थे, कैसे करेंगे, कैसे मिलेंगे, हम कॉन्फ्रेंस में कैसे विषय रखेंगे। ऐसा करके जब धीरे 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 रेगुलर स्वरूप में ऐसी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने लगा, आज ये 8वीं कॉन्फ्रेंस है। बीच में कोविड के दरमियान केवल शायद 2020 में एक ही वर्ष नहीं हो पाई थी, कंटिन्यू से होती है। और दोस्तों, ये कॉन्फ्रेंस का फायदा है, केवल कॉन्फ्रेंस होती है ऐसा नहीं। मोदी जी ने जो बात कही थी, एक कॉन्फ्रेंस परस्पर सहयोग से उसको साकार करने की दिशा में आगे बढ़ी है। और इसीलिए यही कॉन्फ्रेंस का नतीजा है ना, यही संवाद का आउटपुट है कि हम फार्मा सेक्टर में PLI स्कीम 1, PLI स्कीम 2 लाए। यही कॉन्फ्रेंस, यही संवाद का नतीजा है कि हम बल्क ड्रग पार्क, 3 बड़े बल्क ड्रग पार्क बनाने की दिशा में आगे बढ़े। दोस्तों, यही कॉन्फ्रेंस का यही नतीजा है कि हमने 4 मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए आज उसका शिलान्यास करके आगे बढ़ने की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, ऐसी कॉन्फ्रेंस का यही नतीजा है कि हम मेडिकल डिवाइस पॉलिसी लाए। एक कॉन्फ्रेंस में संवाद होता है, कॉन्फ्रेंस में CEO राउंड टेबल मीटिंग होती है और राउंड टेबल में डिस्कशन होता है, इंडस्ट्रीज की ओर से अपनी बात रखी जाती है। और दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट इज प्रो पुअर्स, प्रो फार्मर्स, बट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट है। हम चाहते हैं कि देश को आगे बढ़ने के लिए देश में इंडस्ट्रीज हो आवश्यक है। हम चाहते हैं देश आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता के आधार पर हम हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। और इतना ही नहीं, हम वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी में मानते हैं। और दोस्तों, जिस ट्रेडिशनल ताकत है ना, जो आपकी संपदा है, मोदी जी ने बहुत सही कहा था। 15 अगस्त को रेड फोर्ट से अपनी बात रखते हुए मोदी जी ने कहा था कि हमारी क्षमता का सचमुच और सही मायने में उपयोग हो। हमारे में दोस्तों क्षमता की कोई कमी नहीं है। ये देश में ब्रेन पावर, मैन पावर, मैनेजमेंट पावर, इनोवेशन पावर ये सदियों से है। और जब ट्रेडिशनल वे से आगे बढ़ते हैं, हमारी में रही हुई क्षमता है, एक क्षमता को उजागर करने की कोशिश करते हैं, तब उसका आउटपुट मिलता है। दोस्तों, यही क्षमता है ना, जैसा मोदी जी ने कहा, जब हम G20 की प्रेसिडेंसी कर रहे हैं और उस अवसर पर ये मंत्र रखा है, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली। सारी दुनिया हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। और दोस्तों, यही एथोस ने हमें दुनिया के साथ तालमेल करके, दुनिया के साथ सहयोग करके सह अस्तित्व का सिद्धांत सिखाया है। यही एथोस ने हमें दुनिया के साथ विपरीत परिस्थिति में सहयोग करने के लिए सिखाया है। हम सब लोगों ने देखा
नहीं केवल हिंदुस्तान में लेकिन दुनिया में कोविड क्राइसिस आई, और कोविड क्राइसिस में हमारी क्षमता थी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करना। हमारी क्षमता का लाभ लेके हम दुनिया में कैसे मददरूप हो सके। और दोस्तों, मैं आपको फिर से अभिनंदन करना चाहूंगा, यही हमारी इंडस्ट्रीज है। सबका साथ और सबका प्रयास का सिद्धांत पर हमने काम किया। सबका साथ यानी कि जब कोविड क्राइसिस आई और उस वक्त मोदी जी ने मुझे कहा था कि देश में मेडिसिन की स्थिति क्या है, तब मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया था कि देश की जरूरियात के अनुसार हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। तब मोदी जी ने मुझे कहा था, इतना ही नहीं, हमारी जिम्मेवारी विश्व के प्रति भी है। मुझे दुनिया के देशों के कंट्री हेड का कॉल आ रहा है, हमें दुनिया को भी मदद करना चाहिए। और इसलिए लॉकडाउन की स्थिति में भी हम हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, या तो लॉकडाउन से कैसे हमारे इंडस्ट्रीज को मुक्ति दे, उसके लिए सोचो। और दोस्तों, उस वक्त सरकार ने प्रयास किया। सभी इंडस्ट्रीज, सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात करने की आवश्यकता हुई, तो हमारी मिनिस्ट्री ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, स्टेट चीफ सेक्रेटरी, जहां जहां बात करने की आवश्यकता हुई वहां बातचीत करके मेरी फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए सभी को लॉकडाउन का पास मिले। सभी फार्मा इंडस्ट्रीज ने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। और दोस्तों, हिंदुस्तान की ही नहीं लेकिन विश्व की रिक्वायरमेंट भी हमने पूरी की। दुनिया के 150 कंट्री में आप लोगों ने मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश की। दोस्तों, इसलिए आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। ये हमारी संपदा, हमारी ताकत, हमारी क्षमता का बेस्ट यूटिलाइजेशन था। दोस्तों, यही मोदी गवर्नमेंट की विशेषता है। हमारी क्षमता को कैसे उजागर करें, हमारी क्षमता के आधार पर हम कैसे आगे बढ़े, और इसलिए हमारी क्षमता को हम हमारे लिए और विश्व के लिए उपार्जन करके विश्व के साथ सहयोग करें। दोस्तों, सरकार और इंडस्ट्रीज दोनों साथ में मिलके परस्पर सहयोग से काम करने से क्या रिजल्ट आता है, क्या नतीजा निकलता है, ये भी हम सब लोगों ने देखा है। दोस्तों, जब हम मिलते हैं, हमें संवाद करने का अवसर मिलता है, तब मैं अवश्य कहना चाहूंगा, अभी हमारी क्षमता को हमें हार्नेस करना है। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। दोस्तों, मैं भारत सरकार का प्रतिनिधि के रूप में 3 बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए गया हूं। दोस्तों, मैं कल ही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को एड्रेस करके आया हूं, जहां 135 कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर उपस्थित थे। और दोस्तों, जब बायलैटरल मीटिंग होती है, मिनिस्टर टू मिनिस्टर मीटिंग होती है, तब दुनिया हिंदुस्तान को एप्रिशिएट करती है, हिंदुस्तान की फार्मा इंडस्ट्रीज का उल्लेख करती है, हिंदुस्तान की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की शाख को एक हमेशा प्रशंसा के रूप में देखते हैं। और जब दुनिया हमें इस तरह से देखती है, तब हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। सृष्टि का क्रम रहा है, कंपटीशन हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। कंपटीशन में एक दूसरे को परास्त करने की कोशिश करते हैं, और विजेता होते हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं। दोस्तों, आपके सामने भी कंपटीशन, नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन का सामना आपको हमेशा करते रहना है। और एक कंपटीशन के सामने जीतने के लिए हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज की ओर से हमें 3 चीजों का ख्याल रखना होगा। हम कैसे दुनिया के सामने कंपटीशन से विजेता रहे,
हम कंपटीशन को कैसे जीते? हमें अफोर्डेबिलिटी लानी होगी, हमें क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, अफोर्डेबिलिटी क्वालिटी के साथ हमें हमारी शाख को आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों, क्वालिटी के साथ बार्गेनिंग वो हमारी विश्व स्तरीय शाख को बहुत नुकसान करता है और इसलिए मैं उसको टॉलरेट नहीं करना चाहता। मैं मेरी इंडस्ट्री से अपेक्षा रखता हूं और मुझे विश्वास है कि आपका सहयोग मुझे मिले। जिस तरह से भारत सरकार ने क्वालिटी एश्योर करने के लिए एक्शन लेना चालू किया है, उसमें आपका सहयोग की आवश्यकता है। क्वालिटी के बारे में हमारी लापरवाही दोस्तों कंपटीशन में हमें बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है और इसलिए हम जॉइंटली एफर्ट करें, सामूहिक प्रयास करें। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कोई इंडस्ट्रीज के सामने एक्शन करूं, मैं कोई इंडस्ट्रीज को क्लोजर करना नहीं चाहता हूं। जिस इंडस्ट्रीज को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, इंडस्ट्रीज आपकी नहीं है दोस्तों, इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान की, देश की है। इन सरकार दोस्तों, यू एंड वी, हम और आप अलग नहीं हो सकते हैं। सरकार और इंडस्ट्रीज एक दूसरे के पूरक होती है। आपसे यानी कि देश के नागरिक के लिए, देश के लिए सरकार होती है और सरकार का एक दायित्व बनता है कि देश के लिए वो काम करे। जिस तरह से काम करने की आवश्यकता हो, जिस सेक्टर में काम करने की आवश्यकता हो, जितना काम करने की आवश्यकता हो, उसके लिए प्रोग्रेसिव थॉट के साथ काम करना, ये हमारी सरकार की रीति नीति रही है और सरकार की रीति नीति के साथ कदम से कदम मिलाना, ये दोस्तों हम सब लोगों का दायित्व बनता है। और इसलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, मैं हमारे सेक्रेटरी और फिक्की को अभिनंदन करना चाहता हूं। आज कई उन्होंने लॉन्च कराया, कई चीजों का लोकार्पण कराया। दोस्तों, एफर्ट क्यों हो रहे हैं? एक केवल लॉन्च तो 5 मिनट में हो जाता है दोस्तों, लेकिन उसके पीछे कई महीने की मेहनत लगती है। मुझे पता है, मेडिकल डिवाइस पॉलिसी बनानी है, इंडस्ट्रीज के साथ मीटिंग करना, मंत्री जी के पास प्रेजेंटेशन लेके आना, फिर मैं बोलूं कि फिर एक बार डिटेल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करिए, तो फिर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करना। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं होती है। उसके लिए कई एफर्ट लगते हैं, कई मेहनत लगती है। ये मेहनत के बाद आपके लिए व्यवस्था उपलब्ध होती है। ये व्यवस्था का हम उपयोग कैसे करें, किस तरह से करें? दोस्तों, हमें कंपटीशन को टिकने के लिए सीरीज ऑफ प्रोडक्शन में आना होगा। हमें बेसिक केमिकल्स, वो एग्रो केमिकल्स के लिए, एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज के लिए, फार्मा एपीआई इंडस्ट्रीज के लिए, हमारे अलग अलग पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज के लिए कई बेसिक केमिकल्स होते हैं। हमने PLI 1 लाए, PLI 2 लाए, अलग अलग टाइप की कार्य योजना बनाई। समय समय पर हम भी सीखते गए, समझते गए, आप लोगों का उसमें इनपुट्स मिलते गए और आपके इनपुट्स में ये भी आया कि मंत्री जी आप PLI 1 लाए, PLI 2 लाए, देश में इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग करके हम देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट के ऊपर हमें किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, उसके लिए PLI 1 लाए। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड होके दुनिया में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा सके, उसके लिए PLI 2 लाए। उसके बाद भी आपका इनपुट्स आया कि हम PLI 1, PLI 2 लाए, हमने API पर PLI दी, लेकिन API बनाने के लिए पहले बेसिक केमिकल्स की आवश्यकता होती है। बेसिक केमिकल्स के बाद इंटरमीडिएट KSM और बाद में API बनता है।
तो हमें सुझाव मिला कि क्या हम बेसिक केमिकल्स पर ही पीएलआई ला ले, तो नंबर ऑफ टाइप के एपीआई एग्रोकेमिकल्स का बेसिक केमिकल्स ही इंडिया में बनने लगे, तो वहां से आत्मनिर्भरता चालू करनी होगी, एफोर्डेबिलिटी वहां से आएगी। दोस्तों, आपकी ओर से हमें सुझाव मिला, हमने काम करना चालू किया। आने वाले दिनों में बेसिक केमिकल्स पर भी पीएलआई लेके हम आ रहे हैं। आवश्यकता के अनुसार बदलाव करना, आवश्यकता के अनुसार पॉलिसी फॉर्म करना। यहां पीएलआई से हमने बेसिक केमिकल्स पर आगे बढ़े कि एसएम की स्टार्टिंग मटेरियल इंडिया में हम नहीं बना सकते। मेरी इंडस्ट्रीज, मेरे स्टार्टअप की ओर से ये दिशा में प्रयास होना चाहिए। राउंड टेबल मीटिंग हो तब, या तो ऐसे कॉन्फ्रेंस में आपकी ओर से सुझाव आना चाहिए, आपकी ओर से इनपुट्स आना चाहिए। मैं सरकार में मंत्री होकर पॉलिसी बना सकता हूं, लेकिन इंडस्ट्रीज की सारी समस्या समझो, ये आवश्यक नहीं है, मुझे समझना पड़ता है। हमारी सेक्रेटरी और उसकी टीम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, लेकिन वो कोई अच्छी इंडस्ट्री चला सकते हैं ऐसा नहीं होता है। आप इंडस्ट्री चलाते हैं, हर दिन आप मार्केटिंग करते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप वैश्विक मार्केट में जब बिजनेस करते हैं तब वैश्विक मार्केट की स्थिति प्लस माइनस हमसे ज्यादा आपको टच करता है, और इसलिए आपकी ओर से जो हमें सुझाव मिले इनपुट्स मिले बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए हमारी गवर्नमेंट कंसल्टेशन में मानती है, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। एक गवर्नमेंट में पॉलिसी कभी 5 ऑफिसर बैठ जाए और 6वां मिनिस्टर बैठ जाए और पॉलिसी बन जाए, ऐसा नहीं होता है। हमारी गवर्नमेंट में आपके विचार पर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाता है, विचार आपका होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सामूहिक होता है, डिसीजन गवर्नमेंट करती है, आपके लिए करती है, क्योंकि हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं आपका आउटपुट बढ़े। इसलिए आपका आउटपुट बढ़ाने के लिए हम मेडिकल डिवाइस सेक्टर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मेडिकल डिवाइस पॉलिसी आई। दोस्तों, मेडिकल डिवाइस पार्क का काम और उसका शिलान्यास हो चुका है। मेडिकल डिवाइस पार्क में हम जाके सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा, प्लेग एंड प्ले सिस्टम के द्वारा हम हमारी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज को स्थापित करें, और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जब काम करते हैं तो ये होलिस्टिक अप्रोच के आधार पर हम सोचते हैं। यही सोच में से निकला मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है, तो केवल हम मेडिकल डिवाइस पार्क बना देंगे तो आगे बढ़ जाएगी। मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाना है, मेडिकल डिवाइस पॉलिसी भी लाना है, उसके लिए एफडीआई को ओपन एक्सेस देना है। मेडिकल डिवाइस के लिए ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। देश के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कंसल्टेशन करना है। दोस्तों, देश में नाइपर जैसे इंस्टीट्यूट में मेडिकल डिवाइस सेक्टर का विशेष सेंटर ऑफ एक्सलेंस चालू करके हम हमारी इंडस्ट्रीज के लिए सॉल्यूशन रिड्रेसल सिस्टम लाना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसके पास अपना R&D सेंटर होता है, लेकिन ये देश में 10,000 से ज्यादा हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज में ज्यादातर MSME है। MSME को कोई सॉल्यूशन लाना है, MSME को कोई छोटा मोटा रिसर्च करना है, तो उसके पास R&D सेंटर नहीं होता है। क्या हम हमारी नाइपर के साथ कोलैबोरेशन नहीं कर सकते हैं? मैं इंडस्ट्रीज को आह्वान करता हूं कि आपके सेक्टर में हमारी 6 नाइपर है, हमारा संपर्क सेतु हमारे नाइपर के साथ बनना चाहिए, हमारी मुलाकात हमारे नाइपर के साथ होनी चाहिए। नाइपर में क्या एक्सपर्टाइज है
वहां कौन सा रिसर्च चल रहा है, उसको हमें प्रोजेक्ट देना चाहिए, उसको हमें हमारा इश्यू उसके सामने रखना चाहिए और उसके लिए सॉल्यूशन के लिए काम करने के लिए हमें कहना चाहिए। आप उसको प्रॉब्लम देंगे, न्याय पर सॉल्यूशन लाएगी। दोस्तों सस्ते में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और उसमें से न्याय पर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी भी इनकम हो जाएगी। इंडस्ट्रीज एकेडेमिया के बीच में कोलैबोरेशन, ये विश्व की प्रैक्टिस है, एक ग्लोबली यही प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस का इंप्लीमेंटेशन हम इंडिया में नहीं कर सकते हैं। दोस्तों देश में रिसर्च और इनोवेशन के लिए हमारे देश की इंडस्ट्रीज और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे यूथ, उसको अपॉर्चुनिटी कैसे मिले। बजट में बजट अनाउंसमेंट किया गया। दोस्तों सरकार का संसाधन किसके लिए है? सरकार, जैसा मैंने आपको बताया, सरकार आपकी है और सरकार आपके लिए है। आपके विकास में सरकार का सहयोग कैसे बने? हमारे कोई इंडस्ट्रीज इनोवेशन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, हमारे कोई यंग एंटरप्रेन्योर्स या तो यंग फेलोज, कोई युवा रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके पास रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए हमने आईसीएमआर की रिसर्च इंस्टीट्यूट का डोर देश की इंडस्ट्रीज और युवाओं के लिए ओपन किया है। हम रिसर्च के लिए, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, आप रिसर्च करना चाहते हैं, और मैंने देखा है कि कई ऐसे इंडस्ट्रीज, कई ऐसे साइंटिस्ट मुझे मिले हैं, मंत्री जी हम रिसर्च करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में फैसिलिटी नहीं है, हम XYZ कंट्री में जाएंगे, वो यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया है, वहाँ ये रिसर्च फैसिलिटी है। दोस्तों आज हिंदुस्तान के पास वर्ल्ड क्लास वन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट है। देश के पास रिसर्च और इनोवेशन के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट केवल सरकार के साइंटिस्ट के लिए ही नहीं, वो देश के सभी साइंटिस्ट के लिए ओपन है, सभी इंडस्ट्रीज के लिए भी ओपन है। आप वहां जाके रिसर्च करिए, इनोवेशन करिए, पेटेंट करिए। दोस्तों लो कॉस्ट में से हमें हाई कॉस्ट में जाना है। हमने कंटेनर भर भर के दुनिया को मेडिसिन पहुंचाई, बहुत पहुंचाई है, लेकिन अभी हमें कंटेनर के अलावा लिफाफे में मेडिसिन भेजनी है। एक कंटेनर की कॉस्ट होती है, इतनी कॉस्ट एक लिफाफे में मेडिसिन भेजने से हमें मिल सकती है। दुनिया ने यही किया है। दोस्तों कंपटीशन को सर्वाइव करने के लिए मेरी इंडस्ट्रीज के सामने चैलेंज है, लेकिन हिंदुस्तान की क्षमता है दोस्तों, हम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है मेरी इंडस्ट्रीज, मेरे साइंटिस्ट करके दिखाएंगे। मुझे विश्वास और श्रद्धा है कि हमारे ही साइंटिस्ट, हमारे ही युवा इंडिया में रिसर्च करके, इंडिया में पेटेंट करा के हाई कॉस्ट मेडिसिन हम दुनिया को भेज सकते हैं। और दोस्तों वैक्सीन सेक्टर, आज हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। सारी दुनिया, मुझे बहुत गर्व होता है जब दुनिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम होते हैं, तब इंडिया के 4-5 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम बोलते हैं, वो सीरम इंस्टीट्यूट का नाम बोलते हैं, वो भारत बायोटेक का नाम बोलते हैं, और डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट का नाम बोलते हैं। दोस्तों बायोलॉजिकल इवेंट्स का नाम बोलते हैं। हमें खुशी होती है कि हिंदुस्तान आज विश्व की रिक्वायरमेंट का 65% वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश है। हमारे ही साइंटिस्ट ने, हमारे ही इंडस्ट्रीज ने डिफिनेशन बदल दिया है। वैक्सीन का रिसर्च दुनिया में डेवलप्ड कंट्री में ही होता है, और बाद में 8 साल, 10 साल, 15 साल के बाद ये वैक्सीन हिंदुस्तान में उपलब्ध होता है।
दोस्तों, कोविड क्राइसिस के दरमियान जब देश के सामने चैलेंज आई, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन की जनसंख्या वाला हमारा देश, कोविड महामारी के सामने लड़ने का वेपन क्या, जब प्रधानमंत्री जी ने देश के साइंटिस्ट को पूछा, तब हमारे साइंटिस्ट ने कहा था कि सर, उसका मात्र सॉल्यूशन है वैक्सीन। और तब मोदी जी ने कहा था कि क्या ये वैक्सीन का रिसर्च इंडिया में हो सकता है? और चैलेंज हमारे साइंटिस्ट ने उठाई, चैलेंज को स्वीकार किया। मोदी जी ने कहा था आप मेहनत करिए, मुझे विश्वास है आप रिसर्च कर लेंगे, संसाधन की कोई कमी नहीं रहेगी, सफलता आपकी और निष्फलता सरकार की। ऐसा बोल के प्रधानमंत्री जी ने जब देश के साइंटिस्ट पर भरोसा किया था, हमारे यही साइंटिस्ट ने मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 20 दिसंबर 2020 दुनिया में वैक्सीन का पहला डोज लगा था और 16 जनवरी 2021 हिंदुस्तान ने इंडिजिनियस रिसर्च इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग की हुई वैक्सीन का पहला डोज लगा दिया था। दोस्तों, ये हिंदुस्तान की ताकत और क्षमता है। इतना ही नहीं, लेकिन हम मैनेजमेंट में भी पीछे नहीं है दोस्तों, हम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ये भी दुनिया ने देखा। जब कोविड के दरमियान दुनिया के देशों के साथ मेरी मीटिंग होती थी, तब दुनिया को ये चिंता थी कि इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इकोनॉमिक क्लास, ऐसी कंट्री कोविड मैनेजमेंट कैसे कर पाएगी? हिंदुस्तान में जो कैजुअलिटी होगी उसके आधार पर दुनिया का फिगर बनेगा, ऐसा मेरे कान से सुना है। और दोस्तों, कोविड क्राइसिस के बाद हिंदुस्तान ने जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट करके दिखाया, और मैं 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावोस गया और बिल गेट्स मुझे मिलने आया। दुनिया के बड़े व्यक्ति में माने जाते हैं, कई कंट्री जितनी उनकी सेल्फ की वर्थ है, और वो मुझे मिला, उन्होंने मुझे कहा, वो आए, मुझे शेक हैंड करते के वक्त उसका पहला सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, यू हैव डन गुड बेस्ट कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। हम कर सकते हैं। 2.2 बिलियन डोज एडमिनिस्टर करना छोटी बात नहीं है। 220 करोड़ डोज हिंदुस्तान ने एडमिनिस्टर करके दिखाया। दुनिया को अचंबा और आश्चर्य होता है कि फिगर बोलते हैं ना तो 3 बार पूछ लेते हैं, और 1 वर्ष तक 1 ईयर कंटिन्यूस वैक्सीनेशन ड्राइव चली। 17 दिन ऐसे थे जिसमें एक दिन में 1 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हुआ हो। 1.5 लाख सेशन डेली लगते थे, लेकिन आपने कभी ये न्यूज नहीं सुना, न्यूज़पेपर में कभी खबर नहीं आई कि वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन नहीं पहुंचा, इसलिए बिना वैक्सीन लेते हुए वापस आना पड़ा। कभी ऐसी न्यूज नहीं आई कि वैक्सीन तो पहुंच गया था लेकिन वैक्सीनेटर नहीं थे। कभी ऐसी न्यूज नहीं आई, जी हाँ, दुनिया में कई देशों से ये न्यूज मैंने सुनी है, वैक्सीन आई, वैक्सीनेटर थे लेकिन सिरिंज नहीं थी और वैक्सीनेशन रुका, ऐसा भी आपने कभी नहीं पढ़ा। और ऐसा भी नहीं पढ़ा, वैक्सीनेशन थे, वैक्सीनेटर थे, सिरिंज थी और निडल नहीं थी, ऐसा कभी आपको सुनने नहीं आया। दोस्तों, हिंदुस्तान बेस्ट मैनेजमेंट कर सकता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसलिए हम आने वाले दिनों में हमारा पोटेंशियल समय बदलते समय के साथ हम कैसे बदले, हमारे में बदलाव होना आवश्यक है। आज तक हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं।
दोस्तों, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक नई बात घूमने लगी है। कोविड क्राइसिस ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से लेके बायलैटरल टॉक में विषय आ रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह विषय आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कॉन्टिनेंटल वाइज, समूह वाइज होनी चाहिए। केवल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो अच्छी बात है, हम एक्सपोर्ट करें अच्छी बात है, लेकिन जब दुनिया की रुख बदली है कि अभी अफ्रीकन कंट्री भी चाहती है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, पैसिफिक आइलैंड कंट्री भी चाहती है हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। दोस्तों, ईस्ट पैसिफिक कंट्री भी चाहती है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। सब लोग अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हो, दुनिया चाहती है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो। और उसके लिए अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलप करने के लिए दुनिया से भी सपोर्ट हो रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी सपोर्ट हो रहा है, और कंट्री भी सपोर्ट कर रही है। ये स्थिति का लाभ हम कैसे ले सके, उस दिशा में भी हमें सोचना होगा। वो पोटेंशियल को हमें हार्नेस करना होगा। हम नहीं जाएंगे तो और कोई आ जाएंगे और हमारी अपॉर्चुनिटी लूज होगी। और इसलिए दोस्तों, जो ग्लोबली परिस्थिति निर्माण हुई है उसके ऊपर भी ऐसे इवेंट में, ऐसे कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में भी डिस्कशन होना चाहिए, डेलिब्रेशन होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी क्षितिज में हमें देखनी चाहिए और उसको एनकेज करने की रणनीति भी हमें ऐसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयार करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आज और कल, विशेष करके मेडिकल डिवाइस पर डिस्कशन होना है, राउंड टेबल होना है, कल फार्मा सेक्टर के लिए डिस्कशन होना है, राउंड टेबल होना है। दोस्तों, सब लोग ओपनली अपना इनपुट्स दे। 2 दिन में जो बातचीत हो रही है उसके पर अलग अलग ग्रुप बना के डिस्कशन करें। एक ही कॉन्फ्रेंस से बात पूरी हो ऐसा नहीं है। हम भी हमारे सेक्रेटरी द्वारा बार बार कंपनी के साथ संवाद करके, बातचीत करके, फॉलोअप के रूप में, इंडस्ट्रीज तो फॉलोअप करे ही करे, लेकिन दोस्तों ये पहली बार हो रहा है। गवर्नमेंट आपके सामने से हमने जो कहा था उसमें हमने क्या किया और आपसे गवर्नमेंट ने अपेक्षा रखी थी उसमें आपने क्या किया, उसका भी हिसाब किताब हम करते हैं। आपस में संवाद, आपस में बातचीत, आपस में इश्यू रिड्रेसल सिस्टम के द्वारा हम हमारी इंडस्ट्रीज को और आगे बढ़ाए। हमें जो टाइटल मिला है ना, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, एक मैं शेरपा तेनसिंग ने जब तेनसिंग और हिलेरी ने जब काराकोरम शिखर को सर किया था और उसके बाद उसका एक मीडिया इंटरेक्शन हो रहा था, इंटरव्यू हो रहा था, तब उसको पूछा कि आपको क्या अनुभव हुआ, तो उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि वहां पहुंच तो गए लेकिन वहां टिकना और सर्वाइव करना ज्यादा मुश्किल होता है पहुंचने से भी। आप फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तो बन गए, लेकिन जब फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया बन गया है तब हमारी जिम्मेवारी डबल हो जाती है, क्योंकि वहां हमारी पोजीशन बनाए रखने के लिए हमें नंबर ऑफ टाइप इनोवेशन करना होगा, सतर्क रहना होगा, समय के साथ हमारे में स्वयं में बदलाव करते रहना होगा, हमारी इंडस्ट्रीज में बदलाव करते रहना होगा, रिसर्च करते रहना होगा, नई नई वैश्विक नीतियों को समझते रहना होगा, वैश्विक चैलेंजेस को स्वीकार करते रहना होगा और उसके आधार पर हमें सरवाइव करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है ये हमारी कॉन्फ्रेंस हमें अवश्य
हमारी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल को सर्वाइव करने की ताकत देगी। ये ताकत से हमें प्रेरणा मिलेगी और ये प्रेरणा से हम सर्वाइव होते रहेंगे। आप सबको मेरी ओर से और इस कॉन्फ्रेंस के लिए और कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय जी के प्रेरणात्मक संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद और भविष्य में भी हम सभी आपके निरंतर मार्गदर्शन के लिए आभारी रहेंगे। And now, ladies and gentlemen, I would like to request and invite on stage Shri Abhishek Singh Ji, Director, Department of Pharmaceuticals, to kindly do the honors of presenting a small souvenir as a token of gratitude to all eminent dignitaries on the dais.